Ma'am, you are muted. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So we'll start today. That is your regenerative cycle. Let me draw the diagram first, then I will explain.
M1, M2, this is 0 minus M2 minus M1, M2. So last class we have discussed up to the reheat cycle. So there, what we were doing there, we were expanding the steam in case of the high pressure turbine as well as in case of the low pressure turbine, so that your work output will increase. So in this case, by expanding the heat in two stages, your work output will increase, and your mean temperature of heat addition at high pressure will also not affect the each and every equipment. Okay, so because last class I have told you that the individual components are designed to register. Mainly, your turbine is designed to register maximum cycle temperature. So based upon that one, if we are increasing the mean temperature of heat addition, there we are getting the cycle efficiency is the more, because because your efficiency is the function of your mean temperature. So what we are doing exactly in that reheat cycle. So there we are in intermediate pressure, again we are reheating that steam, so that it expansion work output will increase this much. So in case of the reheat cycle, this is the extra amount of work we were getting. So this was the reheat efficiency. Mm, Then last class I have told you that you have to also find out the steam rate. So steam rate is nothing but it is the 3600, and that is the heat input we were considering. So what was that one? Oh, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैम Um, प्रीवियस स्लाइड में मैम ये प्रीवियस स्लाइड में हाँ, मैं US इसको क्वाइट कोरिलेट कर रही हूँ.
कोरिलेट कर रहे हो. Yes, ma'am. Okay, so that's what I have written. So steam rate is nothing but what was that formula? What is the steam rate? If anyone can say. So The always amount the Energy output, system will IW net. use, huh? W net, W net. work Okay, output. right. W net. So W net means it is the difference of Q1 minus Q2, right? Or W net we can take in terms of your WT minus WP, right? So there we are having the WT. WT is how much? H1 minus H2S plus H3 minus H4S, right? And then WP is your H6S minus H5. So this is your formula for the steam rate. You can calculate by using H1 minus H2S. If you are able to find out your enthalpy at the each and every point, then you can find out what is the turbine work. Okay, so you can find out this enthalpy by using the formula, that Reynolds fraction formula, or you can by getting the result with the help of your steam table, and also you can find out these enthalpies values from the molecular diagram, that is just HS diagram. Already you are familiar with how to find out this enthalpy with the help of your molecular diagram. So this is the steam rate. So in case of your reheat cycle, we are using the reheaters. Okay. So now coming to the regenerative cycle. So this one is your regenerative cycle. So what exactly we are doing here? So all of you know that our main motto in case of the steam power plant is to increase the efficiency of the plant. So in that case, we are using the different kind of accessories like your superheater, economizer, air preheater. Okay. So another way is that in the system itself, in the cycle itself, you can control the mean temperature heat addition in such a way that the amount of heat supplied will be decreased in case of the cycle. Okay, so at exactly at what temperature we can add the amount of it so that it can give you the maximum cycle temperature, and we can get the high power output. So one method we have seen the reheat cycle. Now it is coming to the regenerative cycle. So there are the other method also where we can give the attention on the mean temperature heat addition by using the different equipment. Those are your superheater, or some it can be added at the high pressure, and your also we can increase the temperature of heat. Okay. So temperature of your water which is entering to the boiler, that one also you can increase so that your heat addition in this cycle will be increased. Heat addition means we are supplying the fuel in case of the furnace. That furnace will give you the product of combustion, and that heat is utilized to generate the steam. So suppose we are minimizing the supply of the coal, and we are getting the cycle efficiency more. In that case also you can reduce the amount of the means reduce the cost of your whole power output in terms of the decreasing the supply of the coal, right? So the main motto is in this case is that we will draw some amount of heat during the throttling condition. What will happen? Some amount of steam will be not utilized in case of the turbine. So that amount of steam can be utilized in case of the heater, so that the condensate which are coming out from the condenser, that can be heated and that can be supplied to the boiler. So in actual case, what will happen? So without using this heater, suppose you directly supplying the condensate to the boiler. Okay. So already in case of the boiler, your water temperature is more,
and you are supplying the condensate to the boiler means that condensate will have the low temperature. So in case of the boiler, what will happen, that condensate when it will get mixed with that water, boiler water, so in that case what will happen, your temperature, that process of mixing is the irreversible mixing. Okay, that process of mixing will become the irreversible mixing. So because of that one, what will happen? The properly that condensate and water will not mix. Also, there will be certain heat loss will be there due to this condensate when it mixing with the boiler water, irreversible. That because that method of mixing is the irreversible process. So to avoid that one, what we are doing, we are increasing this condensate temperature to the temperature of boiler at which steam is generating. So in that case, what will happen? Your amount of fuel supplied in case of this point, that will be decreased. Our main aim is to increase the heat addition at this position so that you can get the maximum out of this. So that's why what we are doing. So we are using the heaters so that that condensate will get heated. So and we can get the maximum cycle efficiency. Okay. So here in this case, there will be the interchange of the heat with that condensate and that steam. Okay, so because of that one, some amount of condensate will get heated by the help of that steam which are bleeding from a different position. So, and that can be fed to this boiler. So this type of cycle is known as a regenerative cycle. So in previous reheat cycle, what we are doing, we are focusing on the expansion side. But in regenerative cycle, what we are doing, we are minimizing the amount of coal used in the combustion process. So that method is your regenerative cycle. So here we are using the regenerative heaters. So if you are able to see here, here we will have the high pressure heater and low pressure heater. So this type of cycle is also known as your regenerative or bleeding cycle. So the name is given because the some amount of steam is at the different location we are extracting, because of that one, that this cycle is also known as the bleeding cycle. Okay. So this heating arrangement. So here I have given the I have used two heaters. So there we can use the number of heaters based upon the capacity of your turbine. Capacity of turbine means, suppose we are using the medium capacity turbine. In that case, we can use the maximum three heaters. If it is a high capacity turbine, so there we can use 5 to 7 heaters. Okay, so there are also supercritical boiler turbines. Ma'am, what is the difference between them? Supercritical turbine means in this case that temperature of steam is much more higher than superheated steam. So when I will teach you that supercritical boiler, so there I will tell you this supercritical turbine. Okay, so here the only difference is that it can handle the high temperature and high pressure steam compared to that. Have you remembered? I have told you the pressure below that 80 bar is the Yes, low ma'am. pressure boiler. Above that one is a high pressure boiler. Above that one is some of the boiler that will handle up to 500 bar like that. So that is your
supercritical boiler. There I'll discuss this supercritical turbine. So in this case, we can use the 8 to 9 heaters. And ma'am, this capacity is output. Yes, yes, it's related to the output. Okay. So okay, What is the phase of 1 minus M1 in the previous slide? here, here. So it is the Yes, ma'am. amount of steam. I'll write on it. Okay, what is the amount? Ma'am, what is the phase? Ma'am, it's saturated liquid or steam? So here I have shown saturated. It Okay, ma'am. depends upon the different turbine. Okay. Sometimes it will also at this page also superheated stage also. Okay, if it is the supercritical boiler. Okay, so it depends upon Okay. the turbine. Okay. Because this regenerative cycle, I want to tell you one thing also. In this case, the temperature of your steam which we are extracting from the turbine is, in this case, that will depend upon um, depend upon the steam handle inside the turbine. Okay, the we can say that the condition of the steams bleed from the each heater. Okay, each heater are selected based upon that temperature of the saturated steam, which will be which will be higher than the which will be higher than the 4 to 10 degree higher than the your condenser temperature. This is also uh, um, another what you can say, another method of choosing the temperature of bleed of steam from the turbine. Okay, so इतना हायर होना चाहिए सैचुरेटेड स्टीम से. Okay, तो ये भी एक है. So generally, in case of the some of the boiler, the condensate heating temperature condensate heating temperature is kept to 15 to Celsius. Okay, so this also we used as another criteria, because suppose that condensate temperature is exceeding this temperature. So what will happen? So in that case, automatically the evaporation will increase in case of the boiler. In case of the boiler, so to avoid that one, that condensate temperature should kept below the boiler saturated steam temperature, that is your it should be below 50 to 60 degree Celsius. Okay, so this is also another criteria, which the criteria of the condensate which is entered into the boiler. Okay, so if you are observing in this case, we are using the two heaters. One is the high pressure heater, another one is a low pressure heater. So let us consider the 1 kg of the steam is continuously circulating inside this cycle. So suppose I am drawing the m1 kg of the steam from the turbine, and it is entering the heater, and then it is going to the boilers. Then how much amount of steam will enter to this boiler? That is 1 minus m1. Okay, so if you are observing in this case, the amount drawn from the turbine is 80.1. So that amount of is your m1, and it is at this position. So here, if you are observing, amount of heat addition is reduced. Okay,
So here it will be also heat addition will also reduce, so that to get the maximum cycle temperature. So here your amount of heat addition will increase. In this case, it will increase. So if it is the condensate, then amount of heat addition will increase up to this. Okay. And so here it is the here it is the condensation. Here in this case also, in this case only, there will be the heat addition or heat exchange process. Okay. So this is the actual case where we are adding the amount of heat. Only in this case there will be the heat exchanger process. So that in the system itself, some amount of heat will be utilized to increase the cycle efficiency. Okay. So what is M1? So M1 is your, it is your kg of high pressure steam flow. So similarly, M2 is your kg of low pressure steam per kg of steam flow. Then we are having 1 minus M1 minus M2. It is the kg of steam entering to the condenser. Okay. So in this case, what we will do, because we will do the energy balance, heat balance of this heater. So here, because there is a heat exchange process, so we have to find out what is the energy balance is done in case of the fast heater, then in case of the second heater, that is a low pressure heater. So from there we can find out what is the M1 and M2. After finding out the M1 and M2, then we can find out what is the isentropic work. So here some work is done with the help of the steam. So here we will include the expansion work, that is the 0 to 1. So mass flow rate is, in this case, is your M1. So that we will multiply here. So similarly here in this case 0 to 2 is your expansion process. Here in this case your mass flow rate of the steam is your M2. So we will find out what is the isentropic work here. So similarly in this case the expansion process is 0 to 3. In this case the mass flow rate is your 1 minus M1 minus M2. So that one we will multiply and we will find out what is the isentropic work. Water. And in this case your heat supplied is how much? It is the heat supplied is from the this to this much. Okay. So after finding out the isentropic work done and heat supplied, we can find out what is the efficiency of your of this regenerative plant. So let me find out what is the heat balance or energy balance equation used in this case of high pressure heaters. Okay,
So if you will observe in this case, it is the inlet to the heater and this one is the outlet from the heater. So suppose at this point, your at this point your enthalpy is your H1. Okay, at this point your enthalpy is your HF6. Okay, it is a condition of the liquid. Okay, so here is the dry saturated liquid line, so it will be the HF6. So by using this equation we can find out what is the energy balance equation. So if you are finding out in this case, um, this is the heater, right? So is here it is the inlet, and here it is the outlet. Okay, so that means it is entering to the boiler. So in this case, what will be our formula? So in this case, our formula will be the M1 H1 minus HF6, or we can write as it is the HF6. So then at other side, here it will be, it is input to the heat exchanger. Here also it is input to the heat exchanger or heater. Okay, so these two will be will be become, in this case that will be the 1 minus M1. Okay, and this will be your the condition to enter into the heater will be the HF6, and it is your F6. So I can write it here. It will be the HF6 minus HF5. Okay. So this is the energy balance or heat balance equation for the high pressure heater. Okay. So the high pressure heater means it is a high pressure steam is entering to this heater. Okay. So this is the energy balance equation. So it is the M1 amount of steam is entering, and here it is the H1 minus HF6. The heat is added in this condition. Then we will consider this position inlet to this condition. So it will be 1 minus M1 HF6 minus HF5. Also, we can write down this equation in the form of, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. So this is your M1 H1 minus HF6, and your HF6 minus HF. Okay, so here it will be the HF6 minus HF5. So okay, so it will be equal to HF6 minus HF5. So you can write like this also. So from this equation we can get what is the M1. So M1 is nothing but it is the kg of high pressure steam which is entering to the heater per kg of the steam flow. So from this equation we can get M1 is equal to your, here it is your HF6 minus HF5, and these two will get cancelled. It will be H1 minus HF5. Okay, so HF6 minus HF5. So this will be H1 minus HF5. So how will you get this HF6 and HF5?
You can get it from Mollier diagram, or you can get it from the steam table properties by knowing the pressure of the steam which is bleeding from the, in case of the first stage. So that one also you can find out, because here it is the pressure is your P2 and here it is the P1, here it is the P3 and it is the P4. By knowing the pressure also you can find out what is the H1 and HF6 in this position, and you can calculate the what is the M1. Okay. So this is the heat balance or energy balance equation for the high pressure heater. So similarly, we can find out the heat balance or energy balance low pressure heater. Okay, so here the low pressure steam is entering. So in this case, that equation will be here. So this is your M2. So this will be the M2 into heat is added at this position, M2 into H2 minus HF5, right? Got my point? Okay. तो यहाँ पे लो प्रेशर हीटर में क्या हो रही है, यहाँ पे हीट एडिशन हो रही है आपकी H2 M2 into H2 minus HF5, right, which is equal to, so here it is the 1 minus M1 minus M2, right, which is multiplied with your HF, so this is your HF3 or okay, so this will be the HF5 minus HF3. Okay, so ये आपका लो प्रेशर में है, okay, this is the 3 position, so this will be the HF minus HF3. Okay, it is your HF4. Okay, so first is your M2, H2 minus HF5, which is equal to your 1 minus M1 minus M2 into HF5 minus HF4. HF4. Okay. ये एंटर हो रही है ना HF4. Am I right? All of you are hearing me or not? So here it will be the HF4. So this will be, again, I can write this equation as HF6 plus your H5 minus HF4. HF4 which is equal to 1 minus M1 into HF5 minus HF4. Okay. So this from this I can get what is the M2.
into is, it is your 1 minus M1 HF4, 1 minus M1 HF5 minus HF4 upon your S2 minus HF4, S2 minus HF4. Okay. Ma'am, Hmm. this fourth point will be after pump 1 or after condenser? That one I'm looking at. This one, no? The fourth point here. It is the Should be 1 after minus pump, M1 I minus think. M2. 1, 5. 5 is okay. So this condensate will go, M2 is drawn. So this will be HF3. Okay. So instead of your HF4, this will be HF3. Am I right? HF3. H2 minus HF3. Okay. It is correct. So instead of the HF4, it will be the HF3. So now I can find out what is the isentropic work. So isentropic work means it is related to your turbine work. So turbine work means first it is the M1 into H0 minus H1, M1 into H0 minus H1 plus M2 into H0 minus H2, M2 into H0 minus H2 plus this is your 1 minus M1 M2 H0 minus H3. 1 minus M1 M2 H0 minus H3. So this is the isentropic work. Also, this work we can find out by considering the enthalpy difference only. Okay. So, and by considering the amount of heat draws from the steam turbine, so इसको other में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, that is your H0 minus H1 plus 1 minus M1. So it will be the 1 minus M1 and it is your H1 minus H2. H2. So here it is the S2 minus S3. So this will be the 1 minus M1 minus M2 into H2 minus H3. So we can write like this also as the isentropic work. Then you will have the heat supplied. So heat supplied will be at this position, that is the H0 minus H6, H0 minus H6. Now what is the Rankine cycle efficiency or thermal efficiency? So Rankine cycle efficiency with the help of the regenerative cycle. So we can say that it is the regenerative cycle efficiency. So that is the eta thermal efficiency, which is equal to your work done and your heat input. So work done is how much? It is the M1 H0 minus H1 plus M2 H0 minus H2 plus 1 minus M1 minus M2 H0 minus H3.
upon H0 minus H6, or we can say that it is the HF6. Okay, so this is your thermal efficiency. So you can write it as HF6 as better, because always we are using this term. So this enthalpy we can determine from the Mollier diagram. Then we can find out M1 and M2. Okay, so then we can find out what is the thermal efficiency. So it is about your regenerative cycle. Okay, so on the Thursday we will solve some problem related to this one. If you have steam table, then we can solve one problem now. So let me solve one problem. So single heater is used. Let us take it as the 2. Yeah, 1 kg, m kg, 1 minus m kg. Three, 4, pump 1, outlet. This is given to the heater. Okay, 0.5. And then from the heater, it is going to the boiler. Okay, so here we will use one pump. So if this one is the 5, this will be the 6, this will be the 7. So here 1 kg, 1 kg also means, so pump 2. Okay, so suppose in this case your pressure is your 5 bar, here it is your 30 bar, 30 bar, and in this case let us take it is the 0.1 bar. Okay, the pressure is, it is position is 0.1 bar. So now we can find out what is the thermal efficiency. Okay. So आप लोग draw कीजिए or try to use the steam table, because here already we are having the pressure. Inlet to the turbine is the 30 bar, here it is the 5 bar, and in this case is the 0.1 bar. So now let me plot this TS diagram.
Let us take this temperature is the 400 degrees Celsius. Okay. Celsius. अब देखिए 5 बार में कितना टेम्परेचर आ रहा है. स्टीम टेबल यूज कीजिए. 0.1 बार. यूज द स्टीम टेबल. कितना आ रहा है 5 बार में? Any one of you find out what is the temperature at the मैम 151.83. तो 151 मीन्स आपका सुपर हीटेड कंडीशन है ना. फिर से चेक कीजिए. सबका वही आ रहा है. कौन सा टेबल यूज किया बाबू? मैम सिंपल टेबल यूज की, सैचुरेटेड सुपर हीटेड वाला नहीं है. ओके. कितना बार है? 5 ना. यस मैम. 152 राइट. यस मैम. और स्पेसिफिक वॉल्यूम है आपका एंथैल्पी. राइट डाउन दैट वन. एंथैल्पी HF भी लिखिएगा, HG भी लिखिएगा. लिखे. मैं आप लोगों को ही पूछूंगी, मैं नहीं लिख रही हूँ. लिख लिए ना. HG कितना हुआ बताओ जरा. अभी तो तुम लोग का सर फोड़ने वाले की सिचुएशन आ गई है. बोलो कहाँ हो तुम लोग. ये डायग्राम में Yes, ma'am, HG कर रहे हैं. कितना है? 2749 मैम. 2749. ठीक है. HF 640.8. 640. अच्छा. अब ये देखिए H2 जो ड्रॉ कर रहा है हीट, यहाँ से डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए मुझे. कर सकते हैं ना ये वाला में? आपका P2 प्रेशर हुआ. P1 कितना है? 30 बार राइट. 30 बार. अब आइए P2 कितना हमारा है? कितना है? 5 बार. 5 बार. तो ये इन यहाँ पे होगा ना. तो आपका स्टीम कंडीशन क्या होगा? ड्रॉ कहाँ से? यहाँ से करो कि यहाँ से करो? कहाँ से करो ड्रॉ बताओ. दिख रही है? पॉइंटर दिख रही है मेरी? यहाँ पे ड्रॉ करो या यहाँ से ड्रॉ करो? सैचुरेटेड लाइन से होगा या सुपर हीटेड से होगा? जो स्टीम ब्लीड होगी, जो स्टीम को निकाल रहा है, वो सैचुरेटेड होगा या सुपर हीटेड होगा? यहाँ पे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्टीम? सैचुरेटेड मैम. फिर मार खा गए. 152 कितना है टेम्परेचर?
सुपर हीटेड में हो जाएगा। सुपर हीटेड, राइट। सो आप यहीं पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे है, ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब आ जाइए 5 पर, समझ में आई? मैम एक डाउट था। बोलो। मैम इसका प्लांट का डायग्राम दिखा सकते? हाँ दिखा रहे हैं, रुको रुको थोड़ा, 1 मिनट। हाँ ये देख लो। तो मैम इसमें जब हीटर के लिए एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो H5 कंसिडर करेंगे कि H3 कंसिडर करेंगे? यहाँ पे H5 होगा। मैम जब हम पिछले वाले में किए थे तो वहाँ पे हमने H3 लिया था। H6 H5 लेंगे यहाँ पे, वहाँ पे हमने H6 H3 लिया था। हाँ और वो लो H4 होना चाहिए, नहीं आपके मतलब से? मैम 4 भी नहीं होना चाहिए, मतलब 4 पंप 3 से होगा। पहले है। तो 3 और 4 के अलावा मतलब 4 और 5 के बीच में एक और पॉइंट होना चाहिए जो वहाँ मिसिंग था, मतलब पंप के बाद यहाँ वाला पे H तो चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो हाँ यहाँ ठीक है। इससे पहले जो हमने लो प्रेशर हाई प्रेशर ठीक का है, हीटर वाला बनाया, ठीक है। यहाँ पे 4 के बाद पंप है, उसके बाद कोई पॉइंट नहीं है, तो कैसे करेंगे? Okay, let me see this one. Okay. Here to 1 2 3 तक गया, फिर हमारी कंडेंसर में 4 हुआ, 4 के बाद H4, यहाँ पे हमारी पंप यूज हुई, वो भेजा पंप को 5 किया अप टू दिस, तो ये 5 पॉइंट हुआ। फिर यहाँ पे पंप यूज हुआ, यहाँ पे 6 हुआ। ये डायग्राम थोड़ा गलत है, यहाँ पे कंडेंसर है, फिर यहाँ पे हीट एक्सचेंज हुआ, ये 5 है। ओके, तो यहाँ पे ना आपका H5 ही कंसिडर किया जा रहा है ना, तो पंप्स से यहाँ कंडेंसर गया, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हुआ, फिर इसको ही हम H5 में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट नहीं होगा। नहीं गेटिंग माय, कौन पूछा ये क्वेश्चन? मैम मैं पूछा था। ध्रुव। यस मैम। ओके, यहाँ पे ना कंडेंसेट का यहाँ पे हीट एक्सचेंज करके ये पॉइंट में जा रही है पंप करके, तो ये 5 पॉइंट कंसिडर होगा। आपको यहाँ पे कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत समझ में नहीं आ रही है, नहीं है जैसे कि यहाँ पे है, हमने इसको यूज किया है ना। अब ये क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर हो गया है जो मैं अभी बोली। नहीं मैम। ये देखिए कंडेंसेट यहाँ पे हमने यूज किया हीटर में, तो ये आपका हीट एक्सचेंज करके ये पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, है ना। यहाँ से पंप होके इस 5 पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। मैम 2 से जो आ रहा है उसका हीट हम जो पंप 1 से आ रहा है उसको देंगे। हाँ, तो 2 से जो आ रहा है, फिर हम ये पॉइंट को यहाँ पे ये डायग्राम देखिए ना, ये पंप है, ये भी पंप है, ये भी पंप है।
ठीक है, 3 पंप है। तो यहाँ पे पंप हुआ 5 को, ये हम 5 कंसिडर करते हैं, ये लाइन में ये नहीं है, यही पॉइंट है टोटल, है ना। ये पंप ही एक्चुअली इसको हम ऐसे करके ऐसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो बेटर पंप 4 को ये पंप किया 5, ये ठीक है ध्रुव। कंडेंसेट पंप हुई हीटर को, हीटर के बाद फिर यहाँ से हीट एक्सचेंज करके फिर पंप हुआ 0.5 को, फिर उसके बाद ये जो M1 अमाउंट ऑफ ड्रॉ हो रही है उसमें ये मिक्स हो जा रहा है, ताकि फिर ये कंडेंसेट का टेम्परेचर इंक्रीज हो सके और ये HFC अचीव कर सके, जितना टेम्परेचर होनी चाहिए फीड वाटर का यहाँ पे जो बॉयलर में, वो अचीव कर रही है। पहले तो पंप 1 आपको ये लो प्रेशर हीटर को सेंड करिए, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हुआ, हीट एक्सचेंज करके जो कंडेंसेट हुई जिसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो पंप हो रहा है, फिर यहाँ से विद द हेल्प ऑफ द पंप पाइप से यहाँ पे हाई प्रेशर हीटर में हो रही है, फिर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये डायग्राम ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ये जो पॉइंट हम कंसिडर करना चाहिए, यहाँ पे हम ये पॉइंट और ये पॉइंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके, हम कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे? HF3 एंड HF5, जो कंडीशन ऑफ द स्टीम है जब हीट बैलेंस कर रहे हैं। मैम लेकिन जब कंडेंसेट 4 पे जाएगा तो उसका टेम्परेचर एच वगैरह सब बदल जाएगा। नहीं, ये सिर्फ आपका कंडेंसेट का हीट एक्सचेंज प्रोसेस को ही ये कर रहा है, ये हम पॉइंट ऑफ नहीं ले रहे हैं। जो इनलेट हो रही है फिर यहाँ पे तो आपका वही कंडेंसेट ही हीट हुआ ना, पंप करके हम सिर्फ भेज रहे हैं। कंडीशन यहाँ पे जो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ पंप करके यहाँ पे हीट एक्सचेंजर को वो दे रहा है। कंडीशन यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। तो मैम 4 लेंगे ना, फिर 3 तो नहीं लेंगे ना? नहीं, 4 लेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट में है यहाँ पे इनलेट टू द कंडीशन, और ये हम लेंगे हीट बैलेंस में। ये हीटर है, देखिए यहाँ पे हीट एक्सचेंज हुआ ना, यहाँ पे तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है ये पॉइंट में, ये सिर्फ वो प्रेशर में जितना ये स्टीम का प्रेशर है ना, वो प्रेशर में उसको दे दिया। लेकिन मैम फिर पंप 1 का अगर वर्क लिखेंगे तो उसमें भी कुछ एच के चेंजेस आने चाहिए। ये ना पंप 1 जो 4 के पास है, 4 के पास है, कुछ तो H यहाँ के पे changes आप यहाँ पे वर्क जो है सिर्फ आपका कंप्रेशन वर्क ही कंसिडर किया जाएगा। मैं आपका डाउट समझ गई हूँ। आप बोल रहे हैं कि मैडम यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो हम ये हीट एक्सचेंजर में ये कंडीशन यूज करेंगे क्या, मीन्स यही ना? हाँ मैम, यही डाउट है। ओके, सो मैं उसको देखती हूँ, और कहीं और एक बुक में अगर कुछ अलग टाइप का होगा तो मैं उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी थर्सडे को, ठीक है? ओके मैम। ओके, जिसमें बेटर आप लोग उसको समझ सकेंगे मैं उसको देखती हूँ, ठीक है? सो shall we continue this one? ओके, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ द स्टीम क्या हुआ, जो ब्लीड हो रही है यहाँ पे सुपर हीटेड है, सैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना है 152 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? आपको H2 भी मिल गया,
H2 कितना है बाबू? 2749 है ना? कुछ बोलो। यस मैम। 2749 किलोजूल पर केजी है ना? किलोजूल पर केजी। ठीक है, अब ये है 1 2 3 4, लेट अस गिव इट नेम एज 5 दिए थे ना, 5 यहाँ हीटर है। ये है आपका 5 इनलेट हुआ आपका हीटर को, देन इट विल बी ओके। ये है 6 7, this will be 7, 8, 5. Okay. So this is the isentropic compression. Okay. So what is the value of H6? H6 कितना हुआ? H6 में आपका condition of the 640.8. 640 HF6 होगा है ना? Yes. So this will be the HF6 640 किलोजूल पर केजी। ठीक है, अब फिर इसमें आपका आइसोट्रोप क्या है आपका एंट्रोपी कितना है? एंट्रोपी इसमें नहीं दिया है, आपके में दिया है कुछ? एंट्रोपी है आप में? Ma'am, SF is 1.86. मिला? Yes ma'am, 1.8606. 5 बार ओके। वाटर सेंसिबल हीट यहाँ पे भी नहीं दिया है। आपका एंथैल्पी 2756 होनी चाहिए, आपने देखा था 5.02 बार में ना, तो वहां पे 152 डिग्री सेल्सियस है एग्जैक्टली। आप जिस टिम टेबल में आपको वैल्यूज मिलेगा
उसी के हिसाब से लेंगे, है ना। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिया है ना। कितना है आपका S1? 1.8606. 1. S1 या और क्या लिए हैं आप? S2 लिए नो हैं? मैम, S6 बता रहे हैं। S6 मैम 1.860। S6 कितना है? 1.8606. 1.8606 कितना यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन ना। Yes, ma'am. कौन सा टेबल यूज किए तुम? तुम्हारे पास बुक है? यस मैम, बुक यूज किया। कौन से ऑथर का? पीके नाग। ओके, अब बताते चलो सारे पॉइंट का कितना है। H1 कितना है? H1 कितना है? बताओ H1 कितना है? 3231.7। 30 बार में ना। कितना है? 3230.8. उसमें देखिएगा H1 वैल्यू को निकालने के लिए एट 30 बार आपका 400 डिग्री सेल्सियस में ये सुपर हीटेड टेबल है, सुपर हीटेड स्टीम टेबल में जाइएगा। वहां पे 30 बार में आपकी H1 की वैल्यू कितना है? 3230.8. 30.8 किलो जूल पर केजी, है ना। तो सिमिलरली आपका S1 कितना है वहां पे? एंट्रोपी 6.92। 6.9211. 6.9211 किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट। सो आपका यहाँ पे S1 इज इक्वल टू योर S2, है ना। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो ये आपका S3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ये तीन वैल्यूज तो मिल गए हैं ना। एट 5 बार में आपका S6 का वैल्यू कितना है? 1.8606, है ना। तो ये है आपका HF6, है ना। तो सिमिलरली SG कितना है ये पॉइंट में? SG कितना होगा ये पॉइंट में आपका? इसका वैल्यू होगा देखिए 5 बार में 6.8207। 6.8207 ओके, किलो जूल पर केजी केल्विन। वेरी गुड। सो सिमिलरली आपने HFC फाइंड आउट किया, HFC के HF2 ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो S2 है, S2 वैल्यू है ये 6.92 है और ये है SG वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे आपका S2 इज ग्रेटर देन योर SG फॉर दिस पॉइंट, ओके, एट दिस प्रेशर। सो
सो इन दिस केस आपका S2 जो है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये आपका सुपर हीटेड रीजन है, अगर आपको टेम्परेचर पता नहीं है। आपने अगर टेम्परेचर नहीं देखा होगा, ये दोनों एंट्रोपी को अगर कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू अगर ज्यादा है Sg एट दिस प्रेशर में और ये दोनों प्रेशर में, तो ये आपका सुपर हीटेड स्टेज में है। ओके, सो T2 हमारी कितनी हुई? T2 158 एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो वही होगा। ठीक है, जो भी हो स्टीम टेबल देख के देखिएगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, H2 हमें मिल गई। नेक्स्ट इज योर 0.1 बार। 0.1 बार में देखिए कितना है। 0.1 बार में SF कितना है? ये है आपका SF। SF फाइंड आउट कीजिए, SF कितना है। देन ऑल्सो फाइंड आउट द SFG अपॉन मैम SF 0.6492। SF कितना है? 0.6492। 0.6492 एंड किलोजूल SG पर केजी। SFG कितना है? SFG को देखिए 7.4996। 7.4996। 96। तो इसको हम 7.5 भी कंसिडर करेंगे, है ना। केल्विन केजी केल्विन। तो यहाँ पे आपका HF कितना है? HF कितना है? 191.81। 191.81 यस मैम। किलोजूल पर केजी केल्विन। यस मैम। तो यहाँ पे आपका HFG कितना है? 2392.1। 2392.1 यस मैम। किलोजूल पर केजी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें निकालनी है ये जगह में, राइट। X3 वैल्यू, ठीक है। X3 वैल्यू पहले फाइंड आउट कीजिए कितना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंट्रोपी फॉर्मूला को याद इक्वेट करके कीजिए, मैम। एंट्रोपी को इक्वेट करके, राइट। सो S2 is equal to S3. Who is giving the answer? Ayush. यस मैम। ओके, आप इक्वेट कीजिए कितना है। S2 का वैल्यू है, S3 को क्या लिख सकते हैं बताइए। एनी वन ऑफ यू, S3 क्या होगा? सब भूल S4 जाते प्लस हो। X SFG। S2 is equal to SF3, right, plus H3 SFG3। याद है ये इक्वेशन हम यूज करते थे। तो S2 है आपका कितना? S2 ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है 6.9211। 6.9211 इज इक्वल टू SF3 कितना है? SF3 ये वैल्यू होगा 0.6492, है ना। 0.6492 प्लस X3 इंटू SFG थ्रू 7.4996, है ना। 7.4996। तो यहाँ पे X3 वैल्यू कितना है? 0.83। 0.83। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें मिल गई 0.83। So now I can find out what is the H3.
है ना। H3 का क्या है, HF3 प्लस X3 SFG3, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू भी मिला है, HF3 वैल्यू भी मिला है, तो H3 कितना होगा, HF3 का है 191.81 and plus 0.83 into SFG3 to 7.4996, कितना हुआ H3, 198.03. 9, 198.44. नहीं, ये जगह में हमने गलत किया। आयुष, have you marked this one? Here we have done mistake, right? इसमें H हो जाएगा ना? H. ये H होगा, ये S नहीं होगा। ये X3 HFG3, अब बताओ कितना है HFG3, 2392.1, 2392.1, ये X3 है 0.83, है ना। कितना हुआ H3, 2177. 2177.25. 77.23 253. kilojule per kg, ठीक है। So now we can find the energy balance equation. So energy balance equation क्या है, क्या होगी बताइए। यहाँ पे कितना ब्लीड कर रहा है, m kg, दैट मीन्स कितना होगा, 1 माइनस m होगा, राइट। यहाँ पे हीट एक्सचेंज प्रोसेस में, ठीक है। तो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, so this will be equation will be m2, sorry it is not m2, m into okay, h2 minus h6, h2 minus hf6 is equal to 1 minus m into hf5 hf6 minus hf5, right, hf5। तो यहाँ पे hf6 का वैल्यूज हमें मिल गई है, ये वैल्यूज है ना। तो फाइंड आउट कीजिए m कितना होगा, सारे वैल्यूज हमारे पास है, hf5 भी है, hf6 भी है, h2 भी है। कितना होगा m, h2 के जगह में 2749, hf6 के जगह में 640 होगी, देन hf6 अगेन, hf5 की वैल्यूज क्या है, hf5 तो ये होगा hf5 का वैल्यूज, hf3 191.81, ओके। तो ये आपका होगा hfg का hf5 का वैल्यू।
पुट कीजिए, ये वैल्यू कितना आएगा? आइस कितना है? HF5 होगा, आपका लिक्विड का होगा ना, तो 191.8 आप उसको पुट कीजिएगा। .175. Okay, 0.175 kg. Who has given the answer? Aditya, who has given the answer? Am I? Shivam, okay. So now you can find out what is the turbine work. What is the turbine work? टर्बाइन वर्क क्या होगी? H1 minus H2, right? Multiplied with 1 minus M1, H2 minus H3. ठीक है? So it is your H1 minus H2 plus 1 minus M, H2 minus H3. ठीक है? So this is your turbine work. H1 हमारे पास है, H2 भी है, H3 हमने कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया है. Then you can get what is the turbine work. You calculate it by yourself. Then heat supplied. Heat supplied is how much? It is 1 to 7, right? That is your H1 minus F6 हो सकता है, H7 HF6 हो सकती है. So this will be how much? Find out what is the thermal efficiency. That is your WT minus turbine work and heat supply. That is your Q. So it will be how much? So these three you can calculate by yourself and you can check the answer. Okay. So thank you all. So next class I will explain it again, and also we will study the combination of reheat and regenerative cycle. Okay. So today for the attendance, any one of you here, please send to my WhatsApp. Thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.